Namaskar children, I am Poonam Bagga and welcome to your maths class. We are studying chapter 4 quadratic equations. In our last class we did the first two questions of exercise 4.2. Today we will be taking up the remaining questions where we will be forming some equations out of the word problems given in the question, and then we will be solving those equations by the method of factorization. So question number 3 is, find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So now we need to take two numbers and their sum is 27. Let us take them as x and the other one should be what? Let us see. Let one number be x. Then the other number will be 27 minus x. This will be the second number. आप देखिए दो numbers का sum है 27. तो 27 में से एक तो हमने x मान लिया, तो अब जो बाकी बच गया वही तो होगा दूसरा नंबर, और वो कैसे मिलेगा? माइनस करके. तो ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं कि एक नंबर है 10, 27 का एक पार्ट है 10, तो दूसरा कैसे मिलेगा? 27 माइनस 10 एंड दिस विल बी 17. और तब आप देखेंगे 10 प्लस 17 इट इज़ 27. तो एक नंबर हम x ले रहे हैं और दूसरा होगा रिमेनिंग नंबर विच इज़ 27 माइनस x. ओके, नाउ it has been given in the question that their product is 182. So according to the question, product of the numbers, it will be x into 27 minus x, and this is equal to 182. Now we need to simplify this expression. You can see 27 into x, it will be 27x minus x into x, it will be x square. This is equal to 182. अब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम पहले लिखेंगे. इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, और इस 182 को भी हम LHS में ले आएंगे तो ये हो गया माइनस 182. ऑल दिस इज इक्वल टू 0. नाउ वी नीड टू चेंज द साइन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर. इट इज़ माइनस, वी वॉन्ट टू गेट इट प्लस. इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से. सो -1 इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी now plus x square. This plus will get changed to minus 27x, और ये minus change हो जाएगा plus में. 182 equal to 0 into -1 is 0 itself. Now we need to solve this equation. This is a quadratic equation in its standard form. देखिए आप 182 के factors चाहिए हमें जिनका sum या difference हो 27. We find them by doing the prime factorization of 182. 2 से डिवाइड करते हैं, 91 टाइम्स इट विल गो. नेक्स्ट लेट अस डिवाइड बाय 7, इट विल गो 13 टाइम्स. सो दिस इज 2 7s are 14 एंड दिस इज 13, और आप देखेंगे 14 प्लस 13 इट इज 27 एंड दिस इज द मिडिल टर्म. नाउ वी कैन इजीली राइट एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0. ठीक है, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है. 27 हैज़ बीन रिटन एज 14 प्लस 13. नेक्स्ट, इट कैन बी सॉल्व्ड एक्स स्क्वायर माइनस 14x. यहाँ हम ब्रैकेट को खोल रहे हैं और आप देखिए माइनस इंटू प्लस, दिस विल बी माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे x, उसे बाहर कर दिया, एक x बाहर एक अंदर, माइनस x तो बाहर है, अंदर आएगा 14 माइनस, इन दोनों ही टर्म्स में 13 इज द कॉमन नंबर, वी टेक इट आउटसाइड. देन x विल बी इनसाइड, और क्योंकि यहाँ माइनस है ये साइन चेंज होके माइनस हो गया, और आप जानते हैं 13 इंटू 14 दिस इज 182, तो यहाँ आएगा 14. 13 इंटू 14 इट इज 182. And all this is equal to 0. Now x minus 14, it is the common factor, take it outside. X minus 14, and here we have x and then minus 13. All this is equal to 0. Now this means that either x minus 14 is equal to 0 or x minus 13 is equal to 0. Since their product is equal to 0, so one of them should be equal to 0, and then we can get two values of x. One value can be x equal to 14, यहाँ से 14 RHS में जाके पॉजिटिव हो गया, or we can have x equal to 13. Got it? Now what is x?
x is one of the two numbers given in the question. So x can be either 14 or it can be either 13. Let us write the answer. If first number is 14, then the second number it will be 27 minus 14. देखिए आप रिकॉल कीजिए, हमने दोनों नंबर्स जो लिए थे क्या लिए थे, एक था x और सेकंड है 27 माइनस एक्स. तो अभी हमने जब x की वैल्यू 14 ली, फर्स्ट नंबर 14 लिया, तो सेकंड नंबर हो गया 27 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 13. एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज 13, then the second number is 27 minus 13 and this time it will be equal to 14. तो ओवरऑल दोनों नंबर्स क्या हैं, 13 और 14. So the numbers are 13 and 14. This is the solution to this question. Okay, next we have one more. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. Now we have to take positive integers and also they should be consecutive. मतलब एक के बाद एक लगातार आने वाले इंटीजर्स और उनमें डिफरेंस होता है 1 1 का. जैसे 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 12, 12 के बाद नेक्स्ट 13. तो जब हम 11 में 1 ऐड कर रहे हैं तो 12 आ गया, 12 में 1 ऐड किया तो 13, 13 में 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट इंटीजर मिल जाएगा 14. सो नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स टू बी x, क्योंकि दोनों ही अननोन है, एक को हम x ले रहे हैं. And then obviously the next consecutive positive integer it will be x plus 1. जैसे ही हम 1 ऐड करते हैं हमें नेक्स्ट इंटीजर मिल जाता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, और इसलिए अगर एक इंटीजर है x तो अगला होगा x plus 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज इंटीजर्स, स्क्वायर करेंगे हम दोनों ही इंटीजर्स का. फर्स्ट इंटीजर है x, इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटीजर का स्क्वायर x plus 1 होल स्क्वायर. The sum of their squares, it has been given equal to 365. So this is equal to 365. Okay. Now simplify this and get a quadratic equation. X square plus, यहाँ हम लगाएंगे first identity, first number square, second number square. So 1 square is 1 and in between multiply both of them by 2. So 2 into x into 1, it will be 2x. I have written it directly. This is equal to 365. Now x square plus x square, this will be 2x square and plus 2x plus 1 minus 365 equal to 0. I hope this expression is clear to you. हमने इसको खोल दिया है. अगर आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो एक बार यहाँ भी कर दें. फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर एंड इन बिटवीन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 2. तो ये हो गया x स्क्वायर, दिस इज 2 1s are 2, सो 2x एंड 1 स्क्वायर इज 1. तो इसी को डायरेक्टली हमने यहाँ लिखा है, देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, अब यहाँ से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0. 1 माइनस 365 इज माइनस 364. आप देखेंगे तीनों ही कोएफिशिएंट्स 2 से डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करके एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लाते हैं. Dividing by 2 we get x square plus x minus 2 1s are 2, 2 8s are 16 and 2 2s are 4. This is equal to 0 upon 2, which will be 0 again. This is the quadratic equation. Now we need to solve it by the method of factorization. Yes, यहाँ है नंबर 182 और अभी हमने 182 के फैक्टर्स किए थे. हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए 182 के जिनका डिफरेंस हो 1. यहाँ बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1. और अभी हमने फैक्टर्स किए थे और देखा था 14 into 13 it is equal to 182 and their difference is equal to 1. So we can easily take 14 and 13. X square plus 14x minus 13x minus 182 equal to 0. Now x will be common in the first two terms, take it outside, then x plus 14 and here minus 13 is common, x will be inside और क्योंकि यहाँ माइनस है ये साइन चेंज होके प्लस हो गया and 13 into 14 is 182. This is equal to 0. Now x plus 14, it is the common factor, take it outside. x plus 14 और यहाँ हमें मिलेगा x
और यहाँ से -13. This is equal to 0. Okay. Now this gives us either x plus 14, this is equal to 0, or x minus 13 is equal to 0. This gives us, let me make some space. This implies x is equal to -14 or x is equal to 13. Now in the beginning of the question it has been said that the integers are positive. तो यहाँ हमें मिल रहा है एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर. तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया है इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ इसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे. सो वी कैन राइट, सिंस द इंटीजर्स आर पॉजिटिव वी टेक x इक्वल टू 13 एंड सो द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इट विल बी 13 प्लस 1. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की, तो अगर एक इंटीजर है 13 तो अगला कैसे मिलेगा, +1 करके, एंड दिस विल बी इक्वल टू 14. हमने बात भी की थी कि नेक्स्ट इंटीजर इज x प्लस 1 और यहाँ हम x ले रहे हैं 13, तो नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, दैट इज 13 प्लस 1 विच इज 14 नाउ. Therefore the two consecutive positive integers are 13 and 14. Got it? Let me write one equality sign also here so that the work is fair. Okay, next we have one more part. The altitude of a right triangle is 7 centimeters less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Now here we are talking about a right triangle, and you must know that the side opposite to this right angle, 90-degree angle, this is called the hypotenuse. Okay, and this has been given equal to 13 centimeters. Now we are talking about the altitude of the triangle and the base of the triangle. यहाँ दिया है altitude of triangle is 7 centimeters less than its base. तो दो चीज़ें हैं, altitude और base, दोनों ही unknown है, तो दोनों में से किसी एक को हमें मानना होगा x, और वो हम किसे मानेंगे. यहाँ आप देखिए कि ये altitude base पर डिपेंडेंट है, 7 लेस दैन द बेस, तो हमें लेना चाहिए बेस एज x, बेस को x लेना चाहिए. आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि स्टेटमेंट में जो भी वर्ड या जो भी नेम दोनों एलिमेंट्स में से लास्ट में आ रहा है उसे हम x लेंगे. तो आप देखेंगे बेस इस स्टेटमेंट में लास्ट में आ रहा है, तो इसे हमें x लेना है. एंड मैथमेटिकली इफ यू थिंक इट सेज altitude is 7 less than base, so altitude is dependent on the base, तो हमें लेना चाहिए base as x centimeters. This is the base and this is the altitude. ये altitude कहलाएगी side and this is the side called base in a right triangle. अब altitude दिया है 7 less than base, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 7 less than x, so it will be x minus 7. बेस हमारा है x और जब हम 7 लेस करेंगे तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x minus 7 centimeters. Got it? Now we write the statement. Let the base of the right triangle be x centimeters. Then the altitude of the triangle is x minus 7 centimeters as given in the question. 7 less than its base. Now hypotenuse of the right triangle is 13 centimeters. अब आप बताइए एक राइट ट्रायंगल की इन तीनों साइड्स में क्या रिलेशनशिप होती है. यू मस्ट बी नोइंग दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन रिलेट दीज थ्री साइड्स एज ऑल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. This is equal to hypotenuse square. Altitude means the perpendicular side. Okay, so altitude or perpendicular both mean the same here, and so altitude square plus base square is equal to hypotenuse square. इस relationship से ये तीनों sides आपस में related होती हैं. बस अब हम रख देंगे यहाँ पर altitude की जगह ले लेंगे x minus 7 whole square plus बेस है हमारा x,
So x square, this is equal to 13 square as the hypotenuse is 13 centimeters. Now open this square term, expand it, ये हो जाएगा x square, यहाँ पर सेकेंड टर्म स्क्वायर और बीच में दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये आप जानते हैं सेकेंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से. फर्स्ट नंबर स्क्वायर, सेकेंड नंबर स्क्वायर, -2 into both the numbers x and 7 plus x square equal to 13 square is 169. Now this will give you x square minus 14x plus 49 plus x square equal to 169. We can solve it further. यहाँ पर आप देखिए x square plus x square, this will become 2x square minus 14x and then plus 49 minus 169, this is equal to 0. Now simplify again, 2x square minus 14x, and if we subtract these two terms you will get it minus 120 and then all this is equal to 0. अब आप देखेंगे 2, 14 और 120 तीनों ही 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर बचेगा यहाँ 7 times 14. So here we have all this, x square minus 7x minus 60 equal to 0. 2 6 is 12. Okay. Now this is the required quadratic equation. We need to solve it and get the values of base and altitude. हम इसे solve करते हैं. We take the next page. It is x square minus 7x minus 60 equal to 0. 60 के ऐसे फैक्टर्स जिनसे हमें डिफरेंस मिले 7. आप देखिए 12 into 5 it is 60 and 12 minus 5 is 7. So we can easily relate here x square minus, अब आप देखिए 7 की जगह हम लिख रहे हैं 12 minus 5 और साथ में x minus 60 equal to 0. This will give you x square minus 12x और ये minus minus plus 5x minus 60 equal to 0. Take the common factor out, x minus 12 will be left. Here 5 is common, take it out. X minus 5 12s are 60, so 12 equal to 0. Now x minus 12 is the common factor, take it outside and remaining will be x plus 5 equal to 0. This means that either x minus 12 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0. This further means that either x is equal to 12 or x is equal to minus 5. Now what is x? It is the base of the right triangle and the base cannot be negative. So we can easily discard this value, and so the base of the triangle should be 12 centimeters. Let us write it. Since the base of triangle cannot be negative, we take x equal to 12, and so the base of the right triangle will be 12 centimeter and the altitude is 7 less than the base, so it will be 12 minus 7 equal to 5 centimeters. And you can check your answer. We know that altitude square plus base square, it should be equal to hypotenuse square. Altitude is 5 square and base is 12 square. Let us see what we get. It is 25 plus 144 and this is equal to 169 and this is equal to 13 square, which is the hypotenuse square. The hypotenuse is 13 centimeters given in the question. तो क्योंकि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है. ओके, so always you can verify your answer by placing these values in the conditions given in the question. Next we have question number 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. यहाँ एक कॉटेज इंडस्ट्री कुछ पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है एवरी डे.
we take that number to be X. Suppose the industry is producing X number of articles, and here we are talking about one particular day also. It has been given that on a particular day the total cost of production was ₹90. तो उस दिन जिस दिन टोटल कॉस्ट था प्रोडक्शन का ₹90, हम मान रहे हैं number of articles produced on that day is X. Now it has been given that the cost of production of each single article, it is 3 more than twice the number of articles produced. देखिए articles produced are X, twice this number, it will be 2X, 2 into X, 2X, and it is 3 more than this, so plus 3. This is the cost of production of each single article. बात आ रही है समझ में? तो एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ₹2x plus 3 और x नंबर ऑफ आर्टिकल्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा? इट विल बी x into 2x plus 3 और ये हमें दिया हुआ है इक्वल टू ₹90 ऑन अ पर्टिकुलर डे. अब हम यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करते हुए हम बता सकेंगे कि what is the number of articles produced and the cost of each article. Okay, we begin. Let the number of articles produced on that day be X. Therefore, the cost of production of each article that day, it is 2x plus 3 and this is in rupees. Okay, कैसे दिया हमने ये देखिए फिर से एक बार. The cost of production of each toy was 3 more than twice the number of articles produced. So articles produced is X, twice of it is 2x and 3 more, for it we have plus 3. Okay. Now according to the question, the total cost of production in rupees that day, it was X into 2x plus 3. ये हो गया total cost of production. ये तो है cost एक article का और x number of articles का cost हो जाएगा x into 2x plus 3 और ये हमें दिया है equal to ₹90. Now simplify this and get one equation. 2x into x, it will be 2x square plus 3 into x, it will be 3x. Bring this 90 here, it will become minus 90. This is equal to 0. Now we need to solve this equation. For this we will multiply the coefficient of x square, that is 2, and here we have 90. 2 into 90, it is 180. 180 के ऐसे factors जिनका difference हो 3. Let us find the prime factors of this number. If we divide by 2, it will go 90 times. Again by 2, it will go 45 times. Now by 3, it's 15 times. देखिए क्या मिल रहा है हमें. 2 2s are 4, 4 3s are 12. इसका product आ गया 12 और ये है number 15 और दोनों में difference है 3. Now we get that pair. We can write 2x square plus 3 की जगह हम ले लेंगे 15 minus 12. Then x minus 90 equal to 0. Open the bracket. 2x square plus 15x minus 12x minus 90 equal to 0. Again, take the common outside and it is only x. यहाँ से मिलेगा 2x plus 15 क्योंकि x बाहर है 15 अंदर minus. Now what is common here? You will see 6 is common. Take it out. Now 6 2s are 12 and x. This minus is here. So here the sign will change. It will become plus and 15 6 is 90. So here 15 will come. This is equal to 0. Okay. Next 2x plus 15. It is the common factor. Take it outside. 2x plus 15 and here we have x minus 6. This is equal to 0. Now since the product of these two factors is 0, so one of them should be 0. Either 2x plus 15 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. This implies either x is equal to minus 15 upon 2 or x is equal to 6. Now x is the number of articles produced on that day and the number of articles produced cannot be negative. So we can easily discard this value, negative value. And so we can say that the value of x is 6. We can write here, since the number of articles produced cannot be negative, we take x equal to 6.
Hence, the number of articles produced on that day will be 6. And the cost of production of each article, it has also been asked, and it is given by 2x plus 3 in rupees. This will be equal to rupees 2 into 6 plus 3. Multiply and solve, you will get it equal to 2 6 is 12 plus 3, it's rupees 15. So, the cost of production of each article is rupees 15 and the number of articles produced on that day is 6. Now, their product is coming equal to 90, which is the cost of production of all these 6 articles. So, our condition is getting satisfied and so our answer is correct. Okay. So, this was exercise 4.2. In our next class, we will learn how to solve a quadratic equation by the method of completing the square. Soon we will meet again. Goodbye and keep watching.